Assalamu alaikum. In this video, I'll be performing my lab, my PWM lab, in which we'll be controlling motors using PWM. So, first of all, here I've declared the port B as input direction because you'll be taking input from buttons, in where due to which using which we'll be switching the speed of the motor. So, first of all, here we are using pin 6, which is a PWM PD6, which is PWM pin. So setting that at the output direction because we'll be sending we will be controlling speed from there. Then we are setting the TCCR0A register with COM0A1 1 and WGM01 and 00 at 1. So this will run this on a non-inverting PWM mode with OCR0A register, and then we have set CS00 to 1, so we are using no prescaling. If pin B1 is equals to 0, then OCR0 will get value 91, which will produce 75% duty cycle speed, which will be 75% of the speed of the motor. If pin B1 is equals to 1, which is high, then the duty cycle will be reduced to 50%, so motor will become much slower. And then if pin B2 is equals to 1, then OCR0A value reduces to 63, which is 25% of the duty cycle. So this is how this code works. So now moving towards our second task, in which we'll be controlling the brightness of an LED. So again, here we have set the DDRB pin 7 high, which is at which our LED will be connected, and then TCCR0A value has been set to 0x83. So again, so this time we'll be using the so TCCR0A equals to 0x83, which means that 8 indicates that we will be performing output compare operation OC0 at OC0A, in which we can see from here from the register that we will be clearing OC0A on compare match with up counting and set OC0A on compare match when down counting. And 3 represents that WGM01 and 00 are 11, which means it is in a fast PWM mode. And setting the TCCR0B to 1 means that we are just enabling the clock without any prescaler here, and we are changing the value of OCR0A from 0 to 255, which is basically means that we are increasing the brightness of the LED. So here let's run the simulation, and in the simulation we can see that how this LED is opening and closing and so quickly, which is basically dimming its brightness. So that is how this code will work. So that's it from this lab. Thank you. तो यहाँ पे हम जो हमारी LED का क्या बोलते हैं फेडिंग वाला हम कोड चला रहे हैं, इसमें हम PWM से कंट्रोल करें चीज़ें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारी पोर्ट B की जो 7 पिन है उसको आउटपुट डायरेक्शन में डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये हमारी OC0A पिन है और हम OCR0A रजिस्टर आगे यूज़ करने वाले हैं वैल्यू स्टोर कराने के लिए ड्यूटी साइकिल की, तो इसलिए हमने वो वाली पिन सेलेक्ट की। और सबसे पहले हमने TCCR0A यूज़ किए, इसके अंदर हमने हमारे WGM की सेटिंग्स इस तरीके से रखी है कि हम क्या बोलते हैं PWM फास्ट मोड यूज़ कर रहे हैं, और हमने क्या बोलते हैं जो दूसरा हमारा 8 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने जो क्या बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग फास्ट PWM यूज़ किया हुआ है। और जो TCCR0B में हमने क्लॉक दी है जो विदाउट एनी प्री स्केलिंग,
और फिर एक वाइल लूप लगा है, और इसके अंदर एक फॉर लूप है जिसके अंदर हम एक आई वेरिएबल को 0 से 255 इंक्रीमेंट करा रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम फिर OCR 0A में स्टोर करें। तो जैसे ही मतलब वैल्यू 0 से लेकर 255 तक इसकी इंक्रीमेंट होगी, तो बेसिकली ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 0% से 100% तक इंक्रीज़ होगी कंटिन्यूस, और बीच में एक डिले डाल दिया। और इसी तरह ये वाइल लूप डाल को मैं पूरा ये चीज़ डाल दी है, नेस्ट कर दी है, ताकि ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहे। अब ये हमारे पास इसका हार्डवेयर है रजिस्टर करना। ये हार्डवेयर है जिस पे क्या बोलते हैं पिन, जो ये हमारी पिन डिजिटल पिन 13 है, ये हमारी OC0A पिन है। ये आप इसके बाद देख हमने सकते हैं रजिस्टर लगा के कि एक LED लगा दी, और LED डिम से ब्राइट हो रही है, आप ये देख देखें। सकते हैं इसकी ब्राइटनेस। जैसे पहले डिम से ब्राइट होती है, फिर ब्राइट से डिम, फिर डिम से ब्राइट, न्यू साइकिल इसका चल रहा है। ये हमने L298 के थ्रू मोटर्स की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। PWM के थ्रू हमने एक बटन लगाया हुआ है जो इसकी स्पीड को पहले मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा, और जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो इसकी स्पीड जो है वो गिर के 150 पे चल जाएगी, मतलब तकरीबन हाफ से थोड़ा 55% ड्यूटी साइकिल पे। तो तब तक इसको पावर दे रहे हैं, ये फुल स्पीड पे चल रहा है। फिर ये मैंने बटन दबाया, जब स्लो हो गई है वापस तेज़ हो गई है, वापस प्रेस किया वापस स्लो गई है, वापस तेज़ हो गई है, वापस प्रेस किया स्लो हो गई है।